Alkaji, for such a beautiful recitation of Navkar Mantra, the Maha Mantra. Uh, it's one of those ancient and Anadi month that has been around since eternity, and then in its current form, the one that we say it in is all written in Prakrit, the old language, right? And that's why the words are so pure, because it has existed in the same form as it was recited in the beginning of uh, of the Kal, and it has such immense power, and the power comes from the humility expressed in the mantra itself, right? Because we are bowing down to the Panch Parmeshti, and it's an expression of humility. It's an expression of our humility, or humility of one soul towards those revered beings who have shown us the path. With that said, right, when we go to the Mangala Charan is another expression of the same humility. Right? तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारी के. Bowing down, we are bowing down. Okay, so just muting it. Right. Teen bhuvan mein sar. What is this? The gist of the three bhuvans, the three loks. The and we covered all this in the first dhal. Starting from the Devloks, or the Urdhvalok, the Madhyalok, and the Naraklok, or the Adholoks, right? In all those loks, the complete Lokakash, the gist is Vitrag Vigyanta, right? And this is a enriched form of Panchparmeshti, basically, in a very different shapeless way, where rather than bowing down to any particular dravya as such, we are bowing down to the science, behind the uh, on how one can get to moksha, or how one can get to the state of being Shivkar, right? That formless state, or that state of ultimate purity, where we are in our swabhav and we stay as a soul, as an independent soul, that's inward looking, that's only worried about its own self, own swabhav, and staying there, right? Thus saving ourselves from the transmigration across, right? So that is the science, that is the, Vitrag Vigyan that we are bowing down to, with the complete cognizance, with the triyog, with the yoga of all the three yogs, as they say, man, vachan, and kai. Or we are bringing all of them together, and this is a way of also bringing our focus on the what we are going to study, right? So that's why we always start with Mangalacharan as an expression of our humility, so that we can attend to the topic that we are going to cover, and more importantly, we express our readiness to accept this knowledge with complete humility, because, as I keep saying, a gradient is required always for something to flow, whether it is current, whether it is as a man of science, I would call about these things, although they doesn't matter as such. But everything requires a gradient, whether it is current, whether it is temperature or heat, or whether it is some kind of a liquid, right? Same is the case with knowledge, or same is the case with information, for that matter, if you generalize it, right? And that's where we start. Now, with that said, I'm sure you would recollect that the first Dhal's focus was more upon the transmigration, right? The focus was on basically setting the context, as Pandit Daulat Ramji has done very splendidly, on this. The first Dhal where he's starting is setting the context. And the context is all about, like, before we get into the house, let's understand where we are and why we are here, right? Or basically, uh,
the concept of the four gatis, right? That is what was introduced in the first Dhaal, basically, right? Also, there was a subtle focus on certain aspects around mithyatva, right? And we'll cover this topic in greater detail next, but just to understand, right? First thing is the question, before we get to the question, right? We get to the context, and the context says, we have been a Nigodia Jeev for so long, and just out of sheer coincidence, we became a Kendriya Jeev of other type, a Vanaspati Kai or a Jal Kaik or a Prithvi Kaik or whatever, while not being any consciousness. It just happened based upon the, type of Kashai or this type of Lesha, the state of mind we were in when the moment of Gati Bandh happened, right? And then when that happened, just out of sheer coincidence, we moved out of the Nigodia Gati, which is considered on the relative scale the most nikrist Jaganya form of being, right? And then we moved out from there to become other Ekendriya Jeev of Vanaspati Kai and other types, and from there, for the similar kind of coincidence, we moved over to being a do indriya or teen indriya or char indriya jeev, or for that matter, even becoming the asanghi panchendriya jeevs, right? Asanghi means the one with no consciousness. They have the five senses, but they have no consciousness. By the way, this scale is only one way of putting or classifying the beings, right? Of how a compounded version of a soul and a body can be classified, right? There are other ways in our agam, but since we are focusing on the Chahdhala, this is the way Pandit ji has started with, right? गौरव जी, आप थोड़ा सा प्रिंट का साइज बड़ा कर देंगे प्लीज? श्योर फॉन्ट मेरे को तो चश्मा लगा के भी नहीं दिख रहा है. Oh, okay. Oh, this is good. This is good. This is thank good. you. Okay. Thank you. Yeah. Anyways, we have not started. Yeah, this is good. Yeah. Thank you. So, with that said, right. So, point is, the point is, as we are revising, right, the focus of first Dhaal has been on like this complete, basically transmigration, not necessarily the transmigration of our particular soul, the soul that I am has happened that way, because it's not like it's a linear trajectory from one to another to third to fourth to fifth, right? The way it has happened is it's a convoluted cycle, right? I may have a Nigodia Jeev and stayed that way for long, and then maybe have come out of it to be a Kendriya Vanaspati Ka Jeev, or Pratisthit, type. But then I might have become Nigodia Jeev again. And then I may have come out of it to become a Jalkai and so on and so forth. So it has been back and forth, back and forth, back and forth, till I might have become a Manushya Gati Jeev in the past. And maybe from there I may have become, a Dev Gati Jeev and then come back and so on and so forth, right? So all in all, the point has been that we have been, moving around. We have been Brahmat, right? Brahmat is the word. Bharmat or Brahmat, right? We have been, just wandering around in these four gatis for so long. Now the question that arises is why we have been wandering. While we know there are some souls that have been able to free themselves up, why is that we as a soul, right, have been in this cycle forever, and I don't know for how long we will continue to be here, right? And this is where the topic of mithyatva comes into the play, right? And before I come to this highlight slide, this is just a reflection upon the topics that we are going to cover. The keywords, the mithyatva, kashai, the high intensity of kashai, which leads to the most unfavored situations, that is being a tiryansh or a narak gati jeev. Now, when we say tiryansh, you would remember that tiryansh is a broader classification. Anything which is not a sanghi panchendriya, and for that matter, a manushya gati and a dev gati jeev is considered as a tiryansh gati jeev or a pashu gati jeev, right?
and of course not Naragati. So there, that way, so if you lay upon it the classification based upon the senses, then any jeev from Ekendriya to Sanghi Panchendriya of non-Manushya types, of the non-Dev, non-Manushya, non-Naragati types are all considered as Tiryanj. So it ranges, so it covers the whole, what is that, zoological world and the botanical world, basically, right? That's all considered, as Tiryanj Gati. And then there is Manushya Gati, the Dev Gati and the Naragati Jeevs, right? So point is, what high intensity of Kashai is one that causes the most unfavored circumstances beyond what one might have seen in their life as Manushya as itself, right? Because we always worry and crib about the pains and sorrows and things that we are going through in this form. But this is where Panditji has tried to expand our horizon also, that, there is a world beyond this, your first world and third world problems. There is an nth world problem that you are not even aware of. And these are the problems or the unfavored circumstances that you might have had, seen and faced and, actually lived, being a Tiryanj Gati Jeev or a Narak Gati Jeev. Not just that, even because of the low intensity of Kashai, if you would have ever become a Dev and Manushya Gati Jeev in the past, even then the cycle didn't stop, because if the cycle would have stopped for you, we would not be having this conversation, right? We would not surely be having this conversation, at least between two of us, right? You would have moved on, and this would have not even mattered to you altogether, right? Being in Siddhagati. But while we are here, obviously the generalized fact that we can all accept is we surely would have been a Dev Gati Jeev and a Manushya Gati Jeev in the past. But we kept wondering, right? Because out there, we were not able to apply our consciousness, our acquired, consciousness in the right direction, right? And we might have continued expressing the low intensity of Kashai, which might have either kept us there, or if we would have expressed high intensity Kashai, then we might have fallen from that particular order to become a Tiryanj and Naragati Jeev again, right? Now, so what is the reason for all this, right? Why I might have expressed low intensity of Kashai or high intensity of Kashai, if I even look it from that perspective? What would have led me to, continue expressing the Kashais, the wrong conduct, that is, always? And that is where the second Dhaal comes into the play or comes into the picture. What is the reason for wandering of the Sansar? That is the gist of Dhaal 2. Dhaal 2, the way this poetically it is organized, is made up of 15 different chand, and it's always sung in a Padhari Chang style, right? So it has, I think, 15 matras, and that's what one has to keep in mind from an expression perspective. And as I mentioned, there are 15. So like in the first Dhaal, there were 17 chand. In this Dhaal, there are 15 that we'll cover. And the focus of all those chand is going to be the reason for wandering in Sansar. This is what Panditji has tried to organize or convey to us on why, right? So first we said what, right? So it's such scientifically organized, right? Introduction of the concept, or the the notion of transmigration is what is introduced in the first Dhaal. Second Dhaal is why. What is the reason for wandering in Sansar? And that reason is being mithya drasti, right? That is having mithya darshan, mithya gyan, and mithya acharan, right? Having wrong belief, wrong faith, wrong belief, and wrong conduct. That is the reason. And that's exactly what is the summary of the first Dhaal, or first Stranza of the Dhaal second. Let's read it for one time. Then the way it's read is this way. ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण
वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तीन संक्षेप कहूँ बखान. I would like everyone to do that reading once, maybe together, if possible. That way, it sticks the rag sticks to you. If you could unmute yourself, that would be so kind. Madhvi ji. Madhvi ji, am I audible to you? Yes. Okay, let's do it together. Thank you. ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण, वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान. So this is what Pandit ji is saying. The reason for wandering in sansar, aise mithya drag jnana charan vash. And this is the first part of this stanza talks about the reason. And the reason is clear. It's the mithya drag jnana charan. And drag means darshan. Drag is another word for darshan, right? So we are familiar with the three ratna of Jainism, in summary. Samyak darshan, samyak jnana, samyak charitra. You can imagine this as not samyak darshan, not samyak jnana, not samyak acharan, right? That is mithya. The core word there is mithya, jhutha, right? Mithya is jhutha. Wrong belief, wrong jnana, wrong knowledge, that is, and wrong acharan, wrong conduct. That's the reason. Because of these three things, we have been brahmat bharat dukh janama maran. We have been, basically under the influence of these, we have been wandering around, and bearing the pain of birth and death. Right? So that's what the first part of Stranza 1 or Chand 1 talks about. Tate inko tajiye sujan. Thus, by knowing them, right, by being aware of what they are, understanding what they are, our focus should be to give them up, right? So there are certain things that we get to know, based on our curiosity, so that we can embrace them. Okay, but here we have to know about them so we can give them up. This is like knowing about what alcohol is and what smoking is, so that you, with the full awareness, you can simply give it up or not even take it in. That is the what one should realize, that when there is certain knowledge, certain information that we acquire, so that we know, we can apply our attentive consciousness to ensure that we are not following that, at least, right? Because so far we have been doing that. We have been doing that without even knowing, without being aware that actually we are doing that. And that is what we'll slowly realize as we go through this Stranza by Stranza, as we know, as we further delve into the subject of what is mithya darshan, what is mithya gyan, what is mithya acharan, right? So that said, tate inko tajiye sujan, sun tin sanchep kahun bakhan. And that is what Pandit ji is saying, that by knowing them, you give them up. And I'm going to now next going to in very brevity, in a summary form, I'm going to explain them, right? So all words put together, the meaning comes out as Jeev wanders in this world and suffers the pain of birth and death due to wrong faith or wrong belief, that is, wrong knowledge and wrong conduct. Therefore, after knowing them well, leave them. I, Pandit Daulat Ramji, describe these three in brief and listen to me. Right? So this is just calling upon and setting the context for the Dhaal itself. Now, the key words out there is the three things: Drag, Gyan, and Charit. Right? That is
uh, darshan, gyan, and charitra. And in particular, the qualifying word out there is mithya. So mithya darshan, mithya gyan, and mithya charitra. Let's understand those. What is mithya darshan? To have false or wrong shraddha or faith is mithya darshan. Now, one important thing is mithya darshan is not just about having wrong shraddha in an outer being or supreme being doer of everything. There are other parts of mithya darshan also, like believing that I do everything, right? So it's not just about, someone else being responsible for everything happening around, but also saying that I am the doer of everything. I, as a person, is doer of everything. That is also wrong belief, right? And just calling upon that, because people have this misconception that when we are talking about mithya darshan, we are only talking about being wrong belief that kudev or doers of everything, or there is some supreme being who is doer of everything. It's also about the aspect that having this wrong belief that मैं ही करता हूँ, मैंने ये बनाया, मैंने ये कार खरीदी, मैंने ये घर बनाया, मैंने I made so much of property and so forth, right? That is also mithya darshan, and that is cause of pain and suffering. And I don't have to explain this to you. If you think yourself and contemplate, you will realize that because of this thought being there, how many times you have pained yourself or caused sorrow to yourself, right? Because when you have this belief and something doesn't fall in line with in the parameters of having of this premise that I am doer of this everything, or if something goes against that philosophy or something betrays you, then how much pain it has caused to you in the past, right? So that's mithya darshan, or a aspect, or a example of mithya darshan. Next comes mithya gyan. Mithya gyan is to have false or wrong knowledge of tattva, that is reality and facts. Now we will cover tattva in a bit here, the sat tattva, which are like the fundamentals of Jainism. And for that matter, in the kids class we have covered it in great detail. Today we are just going to touch upon it. I'm sure you are all familiar with the sat tattva being fundamentals, right? So the counter belief to those, or the false or the wrong knowledge, or not even having doubts on that concept, is also mithya gyan. To believe that all other forms of matter are also part of me, or they belong to me, is also mithya gyan, right? So like, oh, this particular pencil, this particular plug, it belongs to me. I bought it with some money, so it is mine, right? Even that, for that matter, is mithya gyan. It's an expression of mithya gyan, right? Because I'm saying, I'm claiming that this pudgal, that this plug is, belongs to me, Gaurav Jain, right? Without realizing. So I'm wrong on two parts. One is obviously that believing that it is part of me, or it belongs to me, and second is on top of it, or most importantly, believing that I, Gaurav Jain, is this body, right? I'm not sensing that when I'm talking about myself, or it's actually beyond being body. It's about jeev, right? And nothing belongs to the jeev. The only thing that belongs to the jeev are their characteristics, and the characteristic is what we are going to cover in a bit in the second Dhaal. Second chand. I keep doing that. Sorry for that. Mithya charitra. What is mithya charitra? Wrong conduct. Charitra is conduct. Acharan. Charitra. To get involved in sensual pleasures or false deeds or hypocrisies, Maya, because of one's own beliefs or as taught by someone else, is mithya charitra. Maya, right? Or being manipulative, or basically trying, just focusing on deriving involved in sensual pleasures of life, enjoying your drinks and enjoying whatever, right? And when I say drink, I'm talking about chai, of course, not beyond that, because we don't at least believe in that kind of process, right? Even that is getting involved in mithya charitra, right? I'm
I'm having this belief that, this is what I enjoy, right? Or, I try to derive pleasure from. That is also an expression of mithya charitra. And it goes beyond, right? So it's just an example. It's not mithya charitra in its completeness, right? So that is what one has to first understand. The reason is wrong belief, wrong gyan, wrong charitra. That is the source of all the problems, all the transmigration. So when we talk about mithyatva in general, mithyatva is a term used commonly for mentioning the three things: the mithya darshan, mithya gyan, and mithya charitra together. The the opposite term for it is actually samyakatva, right? So rather than saying three words again and again and again, you would find in text the word mithyatva. Now, whenever you hear mithyatva, you have to tell your brain that we are talking about all the three together. Okay, mithya drag, that is mithya darshan, mithya gyan, and mithya charit or charitra. Right? Now, when we talk about mithyatva, they are of two types. Okay, a grihit mithyatva and grahit mithyatva. So what is this? What is this? I'm sure you would have heard these words in the past, right? Agrahit mithyatva is about the false or wrong belief, knowledge, and character that is there because of our past karmas, right? So, karma is in Jain science, in Jain philosophy, is a particle. It's pudgal. It's a collection of pudgal particles of a certain type, karma particles, right? In the past, because of our bhav, we have acquired, we have first attracted, then we have got attached with several type of these particles of mithyatva types, of the bad types, right? And the cumulative effect of them, or the wrong beliefs, knowledge, and character that we have because of these accrued particles, is what is referred to as agrahit mithyatva, right? This has been there because of our past births, but that doesn't mean just the last birth, right? It has been there since the very beginning. And that's why sometimes is also referred to as sanskar, right? When a child is born, they are born, they first get that particular life based upon their past karmas, their leshyas and kashayas. Not just that, whatever happens to them, a part of their journey is also dependent on those karma particles and those coming into fruition, right? Those gives us situations, right? And why is that? That's all because of what we have acquired in the past. And as we did acquire something good, right? That's why we have been here, at least being cognizant of this path, and making our conscious efforts, our attentive efforts to follow this path. But beyond that, if you see, we also have agrahit mithyatva, right? And that is the focus of all this, right? So that's why sometimes we say, oh, you know what, I am a born Jain, but I am my pramad, I have my laziness and procrastinations and everything, because it's a reflection of not just grahit mithyat, but also agrahit mithyat. Maybe I'm not able to get to the right path. Maybe I don't have the right sanyam or tap. Like I know about people who have been doing, tap with the full focus for past so many years, but I have not been able to do that. Right? Yes, of course, there is a bigger chunk of my own laziness, my own pramad out there, but there also might be a little bit contribution of agrahit mithyat also, right? Jnana varni karm ka uday and darshana varni karm ka uday. We do all this reading, but sometimes at the right moment, when we retrospect, we realize at the right moment, I was not able to remember that particular concept, which could have easily taken me out of that situation. I expressed my anger because I was not able to
realize or remember that I don't have to do anger or to express my anger outside. And that has caused me so much pain and sorrow, and not just to me, other being also, of course, right? And I'm now guilt-ridden. Why? Because at that time I had some kind of, Jnanavarni karma or Darshanavarni karma coming into the play, coming into the uday, right? And these are just the expression of my agrahit mithyatva. Right? Other side of the equation is grahit mithyatva, that we have acquired, in this life. So many of them, right? So many. I am Jain, but when I started, watching movies and growing up in India, I was getting deeply influenced by the concept of, Param Brahm and Paramatma and whatnot, right? That, why I did so? Born in a Jain family, right? I should not have been on that path or being at least subjected to that kind of belief. That was my acquired belief that I got because the environment around me, right? Being born in a particular culture, and that too, there is always a powerful line of culture, right? So people who are born in US have greater degree of materialism that they keep following, right? अरे ये आईफोन लेना है, उसके बाद ये लेना है, हर साल एक आईफोन आ जाता है, वो लेना ही लेना, right? What is it? It's grahit mithyatva. We are in a rat race at work, at school, at wherever. Even as a householder, we are in a, always expressing this grahit mithyatva, right? And why is that? This is there are other factors too, but if you look at from one perspective, it is an expression of the grahit mithyatva itself, right? One that we have acquired from the environment, the environmental factor, that I will talk about. Right? So not necessarily environmental factor, but I'm just using it because, in psychology, when they talk about concepts, they talk about two things, right? Genetically, sanskars come from genetics and from environment or the upbringing, that is, right? So if you apply the same lens, then you can say a grahit mithyatva is more on the side of analogous, not exactly same, okay? More analogous to, what is an expression of genetics, while grahit mithyatva is more the environmental factor, right? This is just to remember the concept. Please note that it's not the right definition. I'm just trying to reflect upon what, the sciences, the Western sciences talk about, or analogous concept, not even similar concept out there, right? I hope this is clear. The difference in between agrahit mithyatva and grahit mithyatva is clear, because this is very fundamental concept. You will find this word across our agams mentioned so many times. Now, next thing out there is 5 type of grahit mithyatva, right? So when we talk about grahit, let's start from grahit, because that's in more our, as they say, right? What is in your control? What is in your control basically is not to acquire something new, right? Don't acquire new facts or wrong facts and false facts from WhatsApp, as they say it, right? There's so much of false. We are living in not just age of information, but false information also, right? So that is what I would use as an analogy out here. And there are 5 type of grahit mithyat, right? So first is ekant mithyat. Now this ekant is, remember, this is ekant as a word doesn't mean alone or, in that, like, in an empty space. Ekant in this case or in this context means from one viewpoint and a firm viewpoint. While Jainism talks about anekant, multifacetedness or multiple viewpoints, right? Try to look at things from various angles, various vantage points, right? And that you would, even as you make those efforts, you will not be able to, apply that from and get a full picture, multiple view pictures. You may get only partial, but at least it is better than having ekant or a one point of view. And that is what it is about, right? When we believe that this is how it is, this is how it should be done and has to be done, like one and only one way or thought process, my way or highway kind of view,
That is expression of ekant mithyatva. Like a thing is going to be forever or is just for momentary, right? Again, right? I'm there, forever, as, I am a immortal being. That is ekant mithyatva. Or I am the doer of this thing and this is how it should be done. My way is the right way. That is ekant mithyatva. You can apply it in any dimension, of course, like political and beyond. But even like in as a householder, right? We say, hey, this is how it should be done. You may have a way, but I don't agree to that. So be it. Right? This, if you have to live here, this is how you have to get it done. That is an expression of ekant mithyatva, right? The next thing comes is viparit mithyatva. So what is viparit? Viparit as a word means opposite, right? So ekant in the context of Jainism and philosophy, ekant is one viewpoint and single viewpoint. Viparit is opposite, right? A false, wrong, or opposite view of a thing is viparit mithyatva. Like to believe that a person who keeps parigraha and is same as nirgrantha sadhu, right? So saying अरे साधु और आदमी सब सेम होते हैं, देखो आप किस नए से उस बात को कह रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है. जैसे आप, ये तो हम जैनिज्म में बोला जाता है मैं और भगवान एक ही है, क्या वो विपरीत मिथ्यात्व है? पॉइंट इज किस नए से वो बात कही गई है और समझी गई, वो इंपॉर्टेंट. अगर मैं उसको ऐसे बोल रहा हूं मैं और भगवान सेम है विथ एन एक्सप्रेशन ऑफ ईगो एंड प्राइड, राइट, और इन द सेंस कि कुछ नहीं होता है, ये सब मैं सब सेम है और ये सब बेकार बातें हैं, वो विपरीत मिथ्यात्व. अगर ऑन द कॉन्ट्ररी इफ आई एम सेइंग दैट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि मैं और भगवान सेम है क्योंकि हमारी आत्मा का स्वभाव तो सेम, एंड ऑल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू with a promise that me as a soul, as a bonded soul, at some point can free itself and become Bhagwan, right? With the right vinay and humility is not viparit mithyatva, right? ये चीज को समझना बहुत जरूरी है. तो अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं और साधु, निर्ग्रंथ साधु सेम है from the perspective की of the soul, of purity of the soul, or rather I should say the purest form that soul should be in, then it's not viparit mithyatva. But if I say अरे सब सेम है, ये सब बकवास बातें हैं, that is viparit mithyatva. हम उनके तप और उनकी को विनय नहीं दे पा रहे हैं. We are not able to put them at a higher pedestal so that gradient is there and we take them as one showing us the path. That is viparit mithyatva. ठीक है ना? So that's one has to understand, and that's why very नए, जिस नए से वो बात कही और समझी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज की एज में, जिस एज में हम रहते हैं ना, आई थिंक दैट इज द वन दैट इज परहैप्स द मोस्ट मिसिंग. आप कोई भी पॉलिटिकल डिबेट सुने और देखें या जैसे वो बनती है उसको समझें, तो किसी ने उसे एक नए से कहा और दूसरे ने उसको दूसरे नए से समझ के, और नॉट जस्ट समझ के, मैनिपुलेट करके बताया, राइट? दैट इज व्हाट इज द गेम बीइंग प्लेड अराउंड, राइट? तो वहां ये दोनों चीजें आ रही. एकांत, मैंने अपनी व्यू पॉइंट से उस चीज को समझ के बता दिया, तो और वो विपरीत हो गई, राइट? सो दीज टू थिंग्स आर कमिंग इनटू द प्ले. द नेक्स्ट थिंग इज विनय मिथ्यात्व. विनय मिथ्यात्व एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. उसका होना एज ए मिथ्या दृष्टि जीव दैट वी आर is not bad. It's at least outwardly it sometimes would save you from difficult situations, but still it is मिथ्यात्व, है ना? तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि जिस एज में हम रह रहे हैं वहां हम ऐसे पब्लिक में जाके ये ढिंडोरा नहीं पीट सकते, जैसे बहुत लोग बहुत रिलीजन्स करते हैं कि सारे रिलीजन, मतलब जनरली हमारा एक्सप्रेशन ये होता है कि भाई ऑल देव्स एंड रिलीजन्स आर सेम, राइट? बट रियलिटी वो नहीं है. रियलिटी डिफरेंट है, और उसको समझना ज्यादा जरूरी है एक्सप्रेस करने से बेटर, राइट? क्योंकि जो ऐसा एक्सप्रेस करते हैं आउटवर्डली, दे कम आउट टू बी वन विथ लैकिंग विनय, लैकिंग द ह्यूमिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, कुछ रिलीजन्स हैं जो बहुत ओपन में इस चीज को बोलते हैं कि हमारा रिलीजन बेस्ट है,
हमारा पाथ बेस्ट है और सबको इसी पाथ को फॉलो करना पड़ेगा. They have to be, they will be, if they are not doing it out of will, we will force them to follow that, right? At least that's not what Jain Dharma preaches, right? पहली चीज तो धर्म और religion are two different words. They are not just translations of one into another, right? हम जैन धर्म की बात करते हैं, हम जैन religion की बात नहीं करते. Religion is a very small, right, you know, constrained word, right? सो अगर हम उस कंस्ट्रेंट वर्ड के परस्पेक्टिव से बात करें तो विनय मिथ्यात्व इज एग्जैक्टली दैट, राइट? कि जनरली बोला या कुछ लोग ऐसा बिलीव करते हैं. एक चीज होती है कि आप बिलीव करते हो और एक होता है कि आप बोलते हो जस्ट टू वार्ड ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, राइट? दैट आल्सो इज माया, बाय द वे, बट दैट इज माया टू सेव यू फ्रॉम सम बैड सिचुएशंस, राइट? So that said, right, I hope these three are quite clear. If you have any questions on these three, let's cover that first before we move on to the Sanshaya and Agyan. Ekant Mithyatva, Viprit Mithyatva or Vinay Mithyatva. I hope things are clear. Madhvi ji? No, it's clear. Okay, so it is clear. Okay. Yes. So yes, it is clear, right? Thank you. So अब आते हैं हम संशय मिथ्यात्व पे. संशय मिथ्यात्व क्या है? To remain confused. Now this is the one which perhaps we are, as a mithya drashti, we are suffering from most, right? Sanshaya, as a Jain, right? As a Jain mithya drashti, let me put that word. Or rather, I should not say that. I should say mithya drashti who is a Jain. और a Jain who is a मिथ्या दृष्टि, right? हम सबसे ज्यादा सब्जेक्ट हो जाते हैं क्योंकि that again is ग्रहित because हमारी जो एजुकेशन है, कई बार our western education and our knowledge of Jainism are on the conflicting path. बहुत सारे concepts में ऐसा होता है, right? या यहाँ जो एक चीज बोली है कि to remain confused and have doubt that हिंसा is धर्म और अहिंसा is धर्म, right? क्या धर्म है, ये एक बहुत मतलब कंस्ट्रेन करके उसको स्कोप डाउन करके बताया है यहाँ पर कि, लेकिन जैसा मैंने बोला, राइट, कि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां हम कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये इसमें तो ऐसे बताया, इसमें तो ऐसे बताया, ये वाली मैंने किताब पढ़ी थी, ये बंदा बहुत फेमस राइटर है ना, और इसने तो सेपियंस, जैसे मैं सेपियंस को लेके बहुत दिमाग में मेरा बहुत डाउट आ गया बिकॉज frankly that is a very materialistic book. You know, people follow it, they read it, and everyone is clapping for that guy, you know, who wrote the book, but that's a very materialistic view of how human race evolved, right? And संशय आता है कि यार ये तो कितने सिनिकल और मेटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया और यहाँ हम धर्म की दृष्टि से देखते हैं तो ये बिल्कुल अलग बात है. ये जो कंफ्यूजन है, ये जो संशय है जो हमें राइट बिलीफ से हटाता है, राइट फेथ से हटाता है, उसको संशय मिथ्या. संशय मतलब डाउट. संशय एज अ वर्ड, राइट, यू ऑल नो, मींस डाउट, राइट? सो इसको बोला जाता है संशय मिथ्या. टू नॉट बी एबल टू फर्मली बिलीव ऑन एनी वन साइड इज संशय मिथ्या. हालांकि believing on one side and only that side firmly would be ekant मिथ्यात्व. So इन दोनों चीजों को ना साथ रख के समझने की जरूरत है कि जब आप संशय मिथ्यात्व से हटें तो ऐसा ना हो जाए कि आप एकांत मिथ्यात्व को ग्रहण कर लें, राइट? बेसिकली यू हैव टू राइज अबव बोथ ऑफ देम. एकांत मिथ्यात्व भी नहीं होना चाहिए और संशय मिथ्यात्व भी नहीं होना चाहिए, राइट? That focus on anekant is what one should get. So that's what it is. Agyan mithyatva, to not have knowledge about what is in one's well-being and what is not for one's well-being. Hit और अहित का ध्यान ही नहीं, right? Now this is very interesting, right? बहुत सारे लोग होते हैं, right? हम जब उनको देखते तो लगता है यार इसको तो पता ही नहीं है, इसकी अवेयरनेस ही नहीं. That ignorance and bliss is so applicable to them, right? कि वो अपनी, you know, they are, you know, dancing, drinking and you know, getting married, but they have no cognizance of anything beyond that. They are in this moment, they live in this moment,
and they die in this moment. And they are so proud of it. They are expressively, they are so proud of it कि यार वो तो आज मैं जीता हूँ, अभी मैं जीता हूँ और बस मस्ती में रहता हूँ, right? Now वो मस्ती क्या है उसका भी उनको आभास नहीं है कि मस्ती या आनंद जो है वो कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, तो उनको उतने हित और अहित की का ज्ञान ही नहीं है. So that's अज्ञान मिथ्यात्व basically, right? So these are the 5 type of accruing wrong faith, conduct, and belief basically, and knowledge basically, right? So the conversation of real me and mixed me goes in like here. Hey, can you please explain the impacts of mithyat in our practical life? So that innocent one, the mixed one, the confused one asked that. Obviously, one that is subjected to all the 5 grahit mithyat, okay, or is on that side of the fence. Nice question. As you know, many a times you start a business and you lose money in it, or you do not really make enough profit. All this happens because you do not have the knowledge of all the factors or awareness of all the factors that can impact your business. You may know 9, but you don't know the 10th one that may come out because of the your bad karma coming into fruition and come into the play, right? So you see, you had wrong perception, wrong belief, wrong knowledge, and wrong character, right? Because first, wrong perception, because you thought I know all the factors and I can balance them against them, I can manage them very well. And you didn't have you actually have wrong knowledge because you didn't know about that 10th factor, right? So that didn't come to your cognition in the beginning and you couldn't plan around it. So that's wrong knowledge. And wrong character because you worked according to the knowledge of only those 9 and your focus has been on balancing against those 9 factors while not being aware of the 10th one that may have come to your disadvantage. So this is again an example. It's not like one has to apply it on all business situations, because one has to understand this is just an example, just to explain the concept in the form, in the shape that is understood, can be understood by a person who is like a materialistic person, right? So at least for the adult class, I will put it this way, right? So the question comes back from mixed me. So do you mean that Tattva Gyan will make my business profitable? Very materialistic way of putting it. जैसा हम बोलते हैं ना, अच्छा मैं ये सब टोटके करूंगा तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा, है ना? ये जो बिलीफ सिस्टम है सुपरस्टिशन ड्रिवन, राइट, उसके पर्सपेक्टिव से कही हुई बात है ना, कि अच्छा मैं तत्व ज्ञान का ज्ञान हो जाएगा तो क्या मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा? अरे तत्व ज्ञान का आभास हो जाएगा, उसकी अवेयरनेस हो जाएगा, उसका फोकस हो जाएगा, वो आचरण में आ जाएगा, तो बिजनेस नॉन बिजनेस मैटर ही नहीं करेगा. You would be able to rise yourself above these materialistic aspects, these rat race aspects. And that's why, if you see the answer, what does the answer is? No, Tattva Gyan actually will open up your eyes and make you understand what really is yours and how much effort and time should be spent in doing that business and all other activities, right? So basically the point is, if you have the right Tattva Gyan, everything will turn futile. You would understand the futility of these aspects: business, non-business, mine, yours, my business is mine and I have to make it better, I have to create value, whatnot. Everything, one would rise above it. And why business? Even in the aspects of household chores, same thing. In the aspect of, acquiring and imparting knowledge, same thing, right? Tattva Gyan ke aane ke baad, everything will turn futile because your focus would be on the right things, on elevating yourself versus acquiring these materialistic manifestations, right? So that's the focus out here. Wow. Let me give you another example. When you are young, you used to make paper boats and leave them in the bathtub. At some point, those paper boats, out of the water weight acquired, would sink, right? Similarly, if you will go in shelter of someone like Kuguru, who give wrong advice, you will definitely sink and not rise above. Now, this is very subtle, but if you understand, Kuguru, Kudev और कुशास्त्र की बात होती है, right?
सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र के अगेंस्ट. सो व्हाट इज दैट? सो ऐसा बोला जाता है कुछ गुरु होते हैं, जैसे हैं हमारे आसपास भी, राइट? गुरु इन द you know at from a workplace perspective, what we call as mentors, there is a very acquired Western concept, or the concept of guru in the बहुत सारे बाबा और गुरु बाजार में हैं, राइट? उनका फोकस, मैं बाजार में है वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका फोकस ही बाजार है, राइट? देयर focus is to develop and give more followership, right? So that it gives them better view, lack of better term, right? Even if it is not about getting enough materialism, because वो तो उन्होंने acquire कर लिया है, right? उसकी immense supply, but it's beyond the the optics, right? So उनका focus optics पे होता है, right? तो कई बार क्या होता है, ऐसे ऑप्टिकल गुरु जो होते हैं ना, जिनको कूर गुरु बोला जाता है, आप उनके पास जाते हो तो यू एक्चुअली गेट some degree of calmness and focus and everything, and that will give you a false belief कि यार ये सच्चा पथ है और मैं यहाँ रहता हूँ. What you don't realize is कि it's like that boat, paper boat on the water, right? And it's bound to sink at some point, right? कोई पेपर की बोट ऐसी होती है जो थोड़ा ज्यादा देर टिक जाती है बट डूबती तो है, राइट? तो ऐसा बहुत एक स्टोरीज हैं कि वो बंदे ने फला इंडिया के बाबा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अभी मैं किसी से वन ऑफ माय रिलेटिव वाज देयर एंड ही वाज शेयरिंग स्टोरी ऑफ ए हिज आई थिंक बैचमेट फ्रॉम इंजीनियरिंग डेज, कि वो कैसे नोटोरियस बाबा के इन्फ्लुएंस में आ गया, क्योंकि उसने एक फैक्टर राइट था कि वो एक मृत शरीर देख ली. ही स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस एंड ही सॉ ए शव यात्रा, एंड जस्ट बाय हैविंग दैट ही हैड दैट, जिसको इंडिया में हम लोग राजस्थान में मसानिया वैराग्य बोलते हैं, राइट? कि वो जब आदमी शमशान में जाता है ना तो उसे एक वैराग्य का भाव आता है. he suddenly gets applied to subjected to the thought की of the immortality, of and then they have these thoughts. So उसको वैसा शायद thought आया और उसने the first thing that happened out of his agrahit mithyat was he got supplied, or he saw this Baba preaching something great, from whichever text he was referencing, and he got influenced, Hindu guy, and became a disciple of that Baba. He went to his ashram, gave up everything, gave up his engineering studies and whatnot, just andhashraddha se wahan chala gaya. And 5 years down the line, he realized all the bad. Once he had full awareness of the code and conducts being followed in that ashram, he got so disillusioned. He got so disillusioned that he lost even his self-confidence. Right? तो ये वो पेपर वाली स्टोरी है कि कई बार क्या होता है ना, in the beginning everything, the optics were so attractive, right? From even the materialistic vantage point that he was coming in, that it sounded one that will give them the right path. But in reality, once with the awareness of the conduct and codes out there, everything started falling apart, right? तो ऐसी बहुत स्टोरीज हमारी आगम में भी मिलती कि ऐसा हुआ और इस तरह से वो मिथ्या दृष्टि थे और किसी के इन्फ्लुएंस में मिथ्या दृष्टि हो गई, right? तो that's the point, right? That is what is being talked about here. Now, obviously, closing the conversation out here, that this is one expression of Grahit Mithyatva, right? So let's move on, right? So now comes the second stranza, which is the focus is Agrahit Mithyatva, right? Agrahit Mithyatva and the Lakshan of Jeev Tattva. So second stranza goes like this. जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माही विपर्यत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप. यहाँ ये तीन शब्द जो हैं, बिन मूरत, चिन्ह मूरत और अनूप, इन पे थोड़ा फोकस हमें रखना पड़ेगा. I am intentionally going slow today
because these concepts are a bit more difficult to comprehend, to understand than the notion of first dhal. First dhal में बहुत फैक्ट बेस्ड या फैक्ट बेस्ड नहीं कहूंगा बट मोर कॉन्क्रीट बातें थी, थोड़ी कॉन्क्रीट बातें थी, एटलीस्ट एक्सेप्ट द नोशन ऑफ देवगति नरक गति, है ना. यहाँ पर क्या, एवरीथिंग इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट, राइट. वन हैज टू बी हैव बेटर अवेयरनेस ऑफ द जैन फंडामेंटल्स टू अंडरस्टैंड द सेकंड धाल, राइट. तो इसलिए स्लो जाना इज बेटर, is my own way of taking it, right. So जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, right. यहां बात हो रही है 7 तत्वों की, right. So 7 तत्व क्या है, सबसे पहले हम समझें इसको, right. And basically it's an expression that on the path of salvation the true faith of on the 7 तत्व is relevant to the purpose, right. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको सम्यक दृष्टि या सम्यकत्व की प्राप्ति के लिए सबसे पहली 7 तत्वों में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, right, to reach that state, right. So या यूं कह लें कि सच्ची श्रद्धा का एक्सप्रेशन है हैविंग सच्ची, और या सच्चे फेथ का एक्सप्रेशन है, सच्चे दर्शन का एक्सप्रेशन है हैविंग सच्ची श्रद्धा इन दी 7 तत्व. तो उससे पहले हमें ये समझे 7 तत्व क्या है, राइट. तो 7 तत्व कौन से होते हैं, तो जीवादि, जीव आदि, राइट. सो जीव प्लस, नाउ व्हाट आर दैट जीव प्लस, लेट्स कवर दैट क्विकली. सो ये 7 तत्व होते हैं जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, राइट. सो क्या है ये, बेसिकली हम जीव हैं, राइट. हम जीव हैं, या मैं जीव हूं, आप जीव हैं, हम सब जीव हैं, बेसिकली दैट इज द फर्स्ट थिंग, राइट. जो हम नहीं है वो है अजीव, पुद्गल, राइट, जिनमें चेतना नहीं होती. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीव, मैं जब ये बोलता हूं मैं जीव हूं, तो क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर इज आई हु हैज चेतना, who has consciousness, right. I who has certain लक्षण, लक्षण पे हम वही आएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चेतना का होना. और ये एक बहुत चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब हम निगोदिया जीव थे तब भी, या निगोदिया गति में थे, मैं निगोदिया जीव नहीं बोलूंगा क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, निगोदिया गति में थे तब भी हम जीव थे और हम में कॉन्शियसनेस थी, लेकिन वो कॉन्शियसनेस बहुत हैवी डेंसिटी के कर्मों के कारण दबी हुई थी, वो कहीं नीचे दब गई थी, और इसलिए वो एक्सप्रेस आउट नहीं हो पाती थी, राइट. बट अगर हम उन सब कर्मों को हटा दें, वो सारी जो गंदगी का ढेर हमने एक्वायर किया था, अग्रहित मिथ्या, तो उसको हटा दें और जीव को देखें, तो हर जीव में चेतना होती है, हर जीव में कुछ लक्षण होते हैं. अजीव क्या है, अजीव वो होते हैं जिसमें न कभी चेतना थी न आगे कभी चेतना होगी, इनएनिमेट, राइट. इट वुड ऑल्सो चेंज इट शेप्स एंड फॉर्म्स, राइट. जैसा हमने जो हमारी वेस्टर्न साइंसेस का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का फोकस होता है, वो इन अजीवों पे होता है, बेसिकली the dynamics and the chemical aspects of these ajivs. That is the focus of these the core part of our sciences, the Western sciences, right? वो इन पे होता है, और इनमें अगर आप देखें इनमें चेतना नहीं होती, राइट. वो भी आपको दिखेंगे यूरेनियम 238 से 235 बना लिया और ऐसे बनता है, और कार्बन को हाइड्रोजन से मिलाने पे इस टेम्परेचर पे ये बन जाता है, राइट. तो शेप फॉर्म पर्याय वो सब बदल रही है उनकी, लेकिन चेतना नहीं आ रही है, जा रही. ऐसा नहीं हो रहा है कि एक दिन मैंने कार्बन के ऐसे पार्टिकल्स को सबको मिला दिया और उसमें चेतना आ गई. इसीलिए आजकल वेस्टर्न स्कूल्स में एक बहुत अच्छी भी मैंने फिलोसफिकल थॉट सुना था एक साइंटिस्ट से, कंप्यूटर साइंटिस्ट से, विच वाज फोकस्ड ऑन दिस, कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कॉन्शियसनेस आ जाएगी, राइट. तो उनका आंसर था नहीं आएगी, being supplied with the
with the our Eastern philosophy and the Western knowledge in their highest form. That was their conclusion so far कि ऐसा नहीं होगा, राइट? ऐसा नहीं होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना बढ़ा दें कि एक पॉइंट ऐसा है कि रोबोट वुड बिकम completely like human beings. They would still have something missing. They would have that aspect of consciousness missing whatsoever, right? So with the immense information which in itself is ajiv, which in itself is pudgal, you can create an aura. It has consciousness, but in reality it does not have. Consciousness is separate. Consciousness is what separates us jeevs from being an ajiv, right? फिर बात आती है आश्रव क्या होता है, बंध क्या होता है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है और मोक्ष क्या है, राइट? तो हमने सबसे पहले समझा कि भाई जीव है, और जो जीव नहीं है, जिसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, वो सब अजीव है। उन अजीवों में से एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कर्म के पार्टिकल्स, जो हमें पोल्यूट करते हैं, जो जीव की अवस्था को पोल्यूट करते हैं, या एक नए से बात करें, जो उसकी चेतना को आवरण करते हैं, उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं, उसको कवर अप कर देते हैं इन सम शेप और फॉर्म, समटाइम्स कंप्लीटली, समटाइम पार्शियली एंड व्हाट नॉट, राइट? अब ये कर्म पार्टिकल आते कैसे हैं? तो दैट इज वेयर द नोशन ऑफ आश्रव, बंध, संवर, निजरा कम इनटू द प्ले। इस नेक्स्ट की बात हो रही है। द गेट थ्रू विच शुभ एंड अशुभ कर्म पार्टिकल्स कम और कम इज नोन एज आश्रव। सो अब ये इसको बहुत नए से समझाया गया है, और मेरे आंसर्स बहुत इसमें अलग सॉर्ट ऑफ, मैं एक ही तरह से उसको बताऊंगा। तो वो ऐसा होता है कि भाई कर्म के पार्टिकल बाहर हैं, कहीं और हैं, मैं जीव हूं, राइट? जब मैं कषाय करता हूं, राइट, जब मैं लेशा का एक्सप्रेशन करता हूं, बेस्ड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ माय कषायज एंड और लेशा, मैं उन कर्मा पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हूं। या इसको ऐसे ले ले, आई हैव एक्टिवेटेड माय सोल to become a recipient of these karma particles. This is like influx of karma particles, right? और वो हुआ क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया which is expressing that I have activated my soul to attach these particles to me, or to before they get attached, they get attracted to me. There is an influx that starts. I have given them the directionality towards me, and that is what asrav is, right? और जब ये होता है तो it's not just about bad karma particles, it's also about शुभ और good karma particles, right? जैसे मैं अगर बहुत सच्चे भावों से अगर दान करता हूं, तो वो भी मेरी सोल को एक तरह से एक्टिवेट करता है टू अट्रैक्ट शुभ भाव। लेकिन मैंने वो दान करते ही ये भाव कर लिया कि देखो मैं कितना बढ़िया आदमी हूं, मैंने कितनी अच्छी जगह दान किया, और मैं तो मतलब आई एम द बेस्ट। तो मैंने उसके साथ साथ पीछे पीछे कुछ अशुभ कर्मा पार्टिकल भी अट्रैक्ट कर लिए। मान कषाय का पोषण किया ना मैंने, मेरी मान कषाय का पोषण हुआ, और तो वैसे पार्टिकल मेरे पास आ गए, एंड सो फोर्थ, राइट? दैट इज व्हाट आश्रव इज। बंध क्या होता है? आश्रव होने के बाद मैंने और ऐसे भावों का पोषण किया, राइट? तो वो पार्टिकल न सिर्फ आए, वो मेरी सोल के साथ अटैच हो गए, विच इज देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्कंध, राइट? जो जिसको हम बोलते हैं ना बॉन्डेड, या केमिकल बॉन्डिंग जो होता है ना, वैसे एक तरफ मेरी सोल है और ये पार्टिकल आए और उससे चिपक गए, राइट? सो वन, एंड दिस इज वन एक्सप्रेशन, राइट, एज पर अवर आगम्स, कि ऐसा हुआ, ये बंध होता है। और इन बंध के होने से ही, अब एक बार जब ये बंध गए कर्म पार्टिकल, तो आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड, बट वो मेरे हो गए। मेरे हो गए इज ए मिथ्या दर्शन, मिथ्या फेथ, बट मैं उसको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि अब मुझे उनसे वो तभी छूटेंगे जब वो उदय में आएंगे, when they will come into the fruition। और फिर क्या होता है? when they come into the fruition, they give me situations and I react to that situations accordingly। और जब मैं रिएक्ट करता हूं तो वो कर्म पार्टिकल तो खिर गए, they have come into come and go,
but I have now attracted new ones. And as that keep happening, I keep transmigrating. So the transmigration of the soul through the four gatis is a reflection of this process happening, in my control as a soul. कि मैंने उनको कैसे रिएक्ट किया, कैसे सिचुएशंस बनी, और फिर उन सिचुएशंस में मैंने कैसे रिएक्ट किया, एंड सो ये बंध का कारण। संवर क्या है? द स्टॉपिंग ऑफ शुभ कर्मा पार्टिकल फ्रॉम बॉन्डिंग विथ आत्मा इज संवर, राइट? सो अब ये शुभ है ना शुभ, सॉरी माय बैड, गुड एंड बैड, आई वाज कंफ्यूज्ड, व्हाई जस्ट शुभ, आई थिंक आई मिसरेड इट। द स्टॉपिंग ऑफ all type of karma particles from bonding, new karma particle, right? तो जो मैंने प्रोसेस बताया ना कि भाई मैं एक सिचुएशन में हूं और मैंने उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं किया, राइट? और माय रिएक्शन वाज वेरी लिमिटेड और टू द एक्सटेंट टेंड्स टू जीरो, तो मैंने नए कर्मों का आना रोक दिया, और इस प्रोसेस को संवर बोला गया है। अब निर्जरा क्या है? मैंने रोक तो दिया, I have stopped the influx of karma by my own tap and sanyam, right? My being non-reactive to those situations coming to me because of my past agrahit mithyatva or my past karmas. मेरे पास पैकेज तो है ना, वो पैकेज की वजह से मेरे पास ये जब उस पैकेज में से एक एक पॉलिसी मैच्योर होगी, ये सिचुएशंस मेरे पास आती रहेंगी। तो मैंने क्या किया, उन सिचुएशंस में रिएक्ट करना बंद कर दिया, उस वजह से एटलीस्ट नया कुछ नहीं आएगा, राइट? सो दैट इज संवर। निर्जरा इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग अवे द कर्मा पार्टिकल जो मेरे पास पड़े हुए हैं। खर्चा, अब ये खर्चे की बात है, राइट? मैं नया कुछ नहीं कमा रहा हूं, पर जो पुराना पड़ा है मैं उसको निकाल रहा हूं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ निर्जरा, द शेडिंग अवे ऑफ कर्मा फ्रॉम आत्मा प्रदेश, द सोल स्पेस इन स्मॉल नंबर्स इज निर्जरा, right? And nirjara is, in that sense, is getting rid of them, piece by piece, piece by piece, piece by piece. And as you do that, when if we talk it from the perspective of the gunasthans, as you do it, you are rising. You as a soul is rising through those gunasthans, all the way to 14th gunasthan, right? Or 13th gunasthan, and then 14th gunasthan is when you have completely got rid of all your acquired karma particles. There is no grahit mithyatva, so there are no new karma particles coming into getting attached, and you have got rid of all the karma particles which were there, as agrahit mithyatva, right? So आपने उन सबको हटा दिया as a soul, shedding away of karma particles from Atma Pradesh completely, and that is moksha avastha. That is Siddhavastha. That is being Shivkar, Shiv Swarup. Right? That is being Shiv, for that matter. Shiv is the soul in its purest form. That is nothing but Siddha Gati, जिसको अगर पांचवी गति बोला जाता है, या सिद्ध शिला पर जाना जिसको बोला जाता है, सिद्ध लोक में जाना जिसको बोला जाता है. Right? So that is what it is. अब बात यहां ये आ रही है कि इस साइंस पे, इन फंडामेंटल्स पे, ये जो फंडामेंटल्स हैं, ये जो तत्ववादी जीववादी की बात है, इन पे सच्ची श्रद्धा रखना ही इस पथ पे, ये जिसको हम शिव पथ की बात हो रही है ना, उस पे, या जिसको वीतराग विज्ञानता भी बोला गया है, उसके लिए रेलिवेंट है, राइट? तो अगर आप, ये आपके हित की बात है, राइट, इस पे श्रद्धा रखना इज द फर्स्ट पॉइंट, राइट? जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ये आपके प्रयोजन की चीज है, इन पे श्रद्धा रखना ही रेलिवेंट है, प्रयोजन भूत है, इसके बाद कुछ नहीं. सर्धे तिन माही विपर्यत्व, राइट? सो देन द नेक्स्ट पार्ट इज अ रॉन्ग बिलीवर पुट्स दिस फेथ इन देयर एंटाइथीसिस, यानी कि वो अलग, वो इसको बिलीव नहीं करता, वो या तो उसकी श्रद्धा एक पार्टिकल पे ही रह जाती. जैसे आज जिस एज में हम रह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक एज में, उसमें सारा फोकस जो है अजीव पे है, अजीव के एक्विजिशन पे. अब वो अजीव कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि जस्ट एक्वायरिंग अ कार. आदमी कार की बात नहीं करता है तो ट्रेवल की बात करता है, ट्रेवल की बात नहीं करता है तो नॉलेज इंफॉर्मेशन की बात करता है, सो एंड सो फोर्थ.
but the focus is on that only, which is antithesis, right? So ये मिथ्या जो दृष्टि है, जो मिथ्या दर्शन में बिलीव करता है, उसका पर्सपेक्टिव होता है कि उनका फेथ जो होता है इन 7 फंडामेंटल्स की नॉलेज, इन 7 तत्वों की नॉलेज पे नहीं होता है, राइट? अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब क्या मुझे हो गया है, क्या आपको हो गया है क्योंकि हमने वर्ड्स पढ़ लिए, राइट? नहीं, क्योंकि अभी भी हमारी श्रद्धा नहीं है, हम वी आर अवेयर ऑफ इट, वी नो, हाँ ये जैनिज्म का मेन सिद्धांत है, पर जब तक हम में वो प्रगाढ़, वो जो डीप श्रद्धा नहीं आएगी, एंड फ्रॉम इनवर्ड, राइट, बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड of it will not come, and that's where experience, anubhav comes into the play, right? So Jainism is not just about knowing a shlok, right? कि मेरे को पूरा जो हम नहीं पढ़ते हैं आजकल भक्तामर, उस पर हम जा ही नहीं पाते टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, लेकिन मुझे पूरा भक्तामर वर्बैटिम याद है. इज दैट जैनिज्म? नो. मीनिंग को पकड़ना, और न सिर्फ मीनिंग को पकड़ना, उसके बाद उसको रियलाइज करना, उसको एक्सप्रेशन में लाना, उसको हम मन वचन और इंपॉर्टेंटली एक्शंस में लाना, काय में लाना, कार्य में लाना, वहां इंपॉर्टेंस आती है. वहां जाके हम फेल हो जाते हैं, एज ए जैनी हु इज अ मिथ्या दृष्टि, राइट? इन फैक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल इज उपयोग. अब ये उपयोग शब्द क्या है? ये उपयोग इज नॉट यूटिलिटी, बेसिकली उपयोग इज जानना और देखना. ज्ञेय ज्ञायक, ये शब्द हमने बहुत सुना है ना, ज्ञेय ज्ञायक, तदपि निजानंद स्वरूप, और इस तरह से, है ना. तो इसका माने क्या है कि सोल जो है, जो जीव है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? तो वो है भाई जानना और देखना. जैसे वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव है जानना और देखना, है ना. अब इसको धर्म बोला गया है. अब धर्म क्या है? तो साहब वस्तु के स्वभाव को जानना और देखना ही धर्म है. ये किसका धर्म है? ये जीव का धर्म है, या जीव का नहीं है, क्योंकि जीव के पास तो चेतना ही नहीं है ना. तो हमारा धर्म क्या है? इसलिए मैंने वो बोला था कि धर्म और रिलीजन 2 अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार तो किसी वस्तु को जैसी है वैसे ही जानना, यही धर्म है, राइट? वस्तु स्वभाव धम्मो, राइट? और ये किसकी बात हो रही है? जीव, क्योंकि हम जीव है भैया. मैं तो जीव की बात करूंगा, मैं कोई वो हाइड्रोकार्बन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोलियम का स्वभाव क्या है वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस वुड का स्वभाव क्या है वो बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दैट इज ऑल एंटाइथीसिस. दैट इज नॉट, शुड नॉट बी माई फोकस. माई फोकस इज परसेप्शन एंड नॉलेज, जानना और देखना. एंड दैट वे सोल इज यूनिक and sentient and not perceivable with sense organs, right? So ये यहां जाकर थोड़ी सी संशय आता है ना, जो वो संशय मिथ्यात्व की बात हो रही थी कि जिसको हम जान और देख ही नहीं पा रहे हैं, उस पर बिलीव कैसे करें और कैसे मान लें कि सोल होती है, हम इन तत्वों पे कैसी श्रद्धा ला पाए. ये भी जो है मिथ्यात्व का एक्सप्रेशन है, राइट? सो यहां पर उसको ऐसे बोला गया है कि दे हैव नॉट एड्रेस्ड इट पर से कि आप इस श्रद्धा को कैसे बनाएं, क्योंकि दैट इज द प्रोसेस व्हाट वी विल गो थ्रू इन छहढाला एज वी गो थ्रू वन ढाल टू अनदर. यहां सिर्फ ये बताया है कि ये कारण क्या है, रेमेडी नहीं दी, राइट? सो डोंट लुक फॉर रेमेडी इन दिस पर्टिकुलर छंद. दिस छंद इज जस्ट अबाउट एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम, राइट? यहाँ सिर्फ एक्सप्लेनेशन है. एंड इन दैट सेंस बताया गया है कि भाई सोल इज वेरी यूनिक एंड सेंटिएंट एंड नॉट परसीवेबल विद द सेंस ऑर्गन्स. जो 5 सेंस ऑर्गन की बात होती है ना, उनसे आप उसको परसीव नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, राइट? इट्स ओनली कम्स इन योर कॉन्शियसनेस. दैट्स द पॉइंट, राइट? सो दैट सेड, राइट? तो हमने तत्वों को कवर कर लिया. तो अब बात आती है ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीव तत्व जो है ना,
तो वो क्या क्या है। तो इसमें ये जो लास्ट के 3 शब्द हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो 3 शब्द है विन मूरत, चिन मूरत और अनूप, राइट। सो ये 3 शब्द जो हैं इनका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है यहाँ, और वो ऐसे है। विन मूरत मीन्स के लिए शब्द होता है अमूर्तिक, ओके। चिन मूरत मतलब जो चैतन्यमयी है, और अनूप मतलब उपमा रहित है, वन दैट इज बियॉन्ड एनी एक्सप्रेशन और कंपैरिजन, दैट इज अनूप, राइट। तो ये शब्दों की बात हो रही है, नॉट परसेप्टेबल विद सेंस ऑर्गन, एंड दैट इज व्हाट, राइट। तो अगर आप इनका मीनिंग देखें तो क्या बात है, सोल इज यूनिक एंड सेंटिएंट एंड नॉट परसीवेबल विद सेंस ऑर्गन। ये आया किस शब्द से, नॉट परसीवेबल विद सेंस ऑर्गन, ये आया जो शब्द हमने यहां बताया विन मूरत, राइट। और चिन मूरत आया सेंटिएंट से, और अनूप आया यूनिक, राइट। सो ये जो लास्ट पार्ट है, यूनिक, सेंटिएंट, नॉट परसीवेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जीव तत्व, राइट। सो यहाँ 5 कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं। एक बताया उपयोगमयी, द एबिलिटी टू सी एंड नो, जानना और देखना, ये उसकी क्वालिटी है, राइट, ये उपयोगमयी हो गई। अमूर्तिक, which cannot be described by the sense organs, that is amurtik. Chaitanya yani the one which is has consciousness, because that is what differentiate it from the other other द्रव्य, right। तो अब एक द्रव्य की बात होती है कि 6 द्रव्यों से ये लोग बना है, उसमें एक द्रव्य है जीव, राइट। फिर आता है पुद्गल, आकाश, काल, धर्मस्तिका, धर्मस्तिका। सिर्फ जीव में चेतना है, बाकी जो 5 है उनमें कोई चेतना नहीं, वह चेतन है। पुद्गल से लेके आकाश और काल, धर्मस्तिका और अधर्मस्तिका में कोई चेतना नहीं। दैट्स व्हाई दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक। बाय द वे, जब हम ये कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट है, अगेन नए की बात है, स्कोप डाउन किया है इसको। आत्मा में अनंत गुण है, अनंत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स उसके डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। उपयोगमयी होना, अमूर्तिक होना, चैतन्य होना, अनंत गुणों का पुंज, ये वो बात आ गई कि उसमें अनंत गुण है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट वर्च्यूज। और नेक्स्ट इज उपमा रहित, विच इज अनूप, राइट। अनूप है वो, विदाउट एनी एनालॉजी है, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अच्छा, जब इसमें भी एक बहुत फिलोसफिकल एंगल आता है कि भाई क्या सारी आत्माएं एक हैं, क्या एक आत्मा जो मेरी आत्मा है, गौरव जैन की, और जो अलका जी की आत्मा है, क्या वो एक है। तो एक नए से कहा जाता है हाँ वो एक है सब, लेकिन दूसरे नए से कहा जाता है नहीं नहीं वो अलग अलग है। बट अलग अलग है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, ऐसे ऐसे जानना उसको, राइट। दे कैनॉट इन्फ्लुएंस, वन कैनॉट इन्फ्लुएंस द अदर, right, everyone is responsible for their own conduct and their own cycles, right, that is वो उसको वैसे जानना है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो दैट सेड, राइट, यहाँ कुछ और कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जैसे कि उपयोग कितनी तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। सो दर्शन और ज्ञान के पर्सपेक्टिव से इनको डिफाइन किया है। द वन विच एक्सेप्ट्स जनरल अथॉरिटी इज नोन एज दर्शन उपयोग। This is stable and has no alternatives and has no shape, size and magnitude. तो इसको हम कैसे देखते हैं, तो भाई जो चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, राइट। सो चक्षु दर्शन यानी जो चक्षु यहाँ आंख से नहीं मतलब है, इट्स अबाउट ऑल द सेंस ऑर्गन। सो सेंसरी जो दर्शन उपयोग है उसको चक्षु दर्शन बोला गया है। अचक्षु मतलब विच इज नॉन सेंसरी, राइट। Avadhi is on the scale of time, right? With the knowledge of the time, the past, present, and future, so that I understand how it has changed its form. A particular object has changed its forms. That's Avadhi darshan. And Keval darshan is in its totality, right? Complete, like, which is complete darshan, which is like from covers all the other 3 and beyond, right? So that is what it is. And then when we come to Jnanopyog, the one which accepts vastu, things with specific characteristics, is known as Jnanopyog. And how do we get that? This is alternatives and has shape, size and magnitude. So that is Mati, Shrut, Avadhi, Man Paryay, Keval Gyan, Kumati Gyan, Kushrut Gyan and
को-अवधि ज्ञान और विभंग, राइट? सो दिस इज अल्टरनेटिव, लाइक जैसे मति है तो विच इज बिकॉज ऑफ आवर बेसिकली विजडम, राइट? उसकी वजह से जो ज्ञान है और ज्ञान उपयोग है, उसकी वजह से जो हमने वस्तु को समझा है, दैट इज मति ज्ञान उपयोग। श्रुत यानी मैंने पढ़ा और उस पढ़ने के हिसाब से वस्तु को समझा, राइट? सो दैट इज श्रुत ज्ञान उपयोग। अवधि यानी विद द नॉलेज ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट? मैंने किसी वस्तु को समझा, और यहाँ वस्तु जो है इसको सारे द्रव्य जानना, राइट? इस पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो हालांकि फोकस शुड बी ऑन द जीव, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जीव, because that is the one where which would lead us to the path, but you can apply it on that side also. मन पर्याय means दूसरे के मन की बात को समझ लेना और उसके हिसाब से किसी वस्तु को जानना। केवल is complete in totality. अब कुमति, कुश्रुत and कुअवधि are just opposite of the श्रुत, अवधि and मन, basically, right? So कुमति मतलब, या sorry, I stand corrected. मति ज्ञान का उल्टा है कुमति ज्ञान, right? So basically मैंने किसी चीज को समझा with a wrong point of view, that is, कुमति ज्ञान, or with the wrong wisdom applied, that is what it. कुश्रुत यानी wrong text की information से, right? Wrong facts के बेस पे मैंने किसी चीज को समझ लिया और उसको accept कर लिया, that is that, right? And कुअवधि is like, vibhang, right? So complete, like बेसिकली जो उसके ट्रांसफॉर्मेशंस का एक गलत रिप्रेजेंटेशन को मैंने मानकर उस वस्तु के स्वभाव को समझा। सो दैट इज व्हाट इट इज, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज। सो फ्यू डेफिनेशंस, राइट, व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर the coursework also is lakshan, right? Characteristics which segregates one specific tattva, thing, from mixture of different tattva is a lakshan. Lakshan यानी differentiating characteristic. तो यहां जो हमने ये बात की कि भाई जीव तत्व के कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बेसिकली लक्षण है, राइट? ये लक्षणों की बात हो रही है, इन लक्षणों का फोकस है, राइट? और वो लक्षण क्या है? उपयोगमयी, अमूर्तिक, चैतन्य, अनंत गुणों का पुंज या पिंड और उपमा से रहित, ये जीव के लक्षण हैं, ऐसा जानना, राइट? निर्दोष लक्षण क्या है? जो फॉल्टलेस कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। अब मतलब क्या है, जैसे बहुत सारे लक्षण होते हैं, है ना, या ऐसा कह लें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हर तत्व में पाए जाते हैं, तो उस दृष्टि से हमने इनको अलग अलग तरह से बताया है कि भाई निर्दोष लक्षण क्या होते हैं? भाई द कैरेक्टरिस्टिक विच डज नॉट पोजेस अतिव्यक्ति, अव्यक्ति एंड असंभव फॉल्ट्स और दोष आर कॉल्ड एज निर्दोष लक्षण। अतिव्यक्ति दोष क्या होते हैं? कि भाई द कैरेक्टरिस्टिक विच इज फाउंड इन द मेन टारगेट, जो मेन वस्तु जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड अदर्स ऑल्सो, जो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इनमें, जैसे भाई अमूर्त होना जीवों में होता है, लेकिन कुछ अजीवों में भी होता है कि वो यू कैन नॉट एक्चुअली डिस्क्राइब देम बेसिकली। सो अमूर्त का होना जैसे कि भी विच डज नॉट हैव रूप, रस, गंध एंड स्पर्श, जिनमें ये सब नहीं होती। तो ऐसी क्वालिटीज के लिए आप एक, यू कैन ऑलवेज कम अप विद एन एग्जांपल ऑफ ए अजीव तत्व विच हैज विच इज अमूर्तिक, राइट? सो दैट वे इट्स अ दोष, राइट? क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जीव, अगर मैं जीव के मेरा मेन टारगेट है ना, तो वो जीव में भी है और कुछ अजीवों में भी होता है, ऐसा मानना, राइट? अव्यक्ति दोष का ऐसा बताया कि भाई द कैरेक्टरिस्टिक विच इज फाउंड इन अप टू सर्टेन स्टेट ऑफ टारगेट एंड आफ्टर दैट इट इज नॉट देयर, ठीक है ना? तो जैसे कि भाई एंगर, कषाय की बात करते हैं ना, तो अगर हम गुण स्थान का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो ऐसा बोला जाता है, आगम ऐसा बताते हैं कि एंगर जो है, क्रोध जो है, वो 9th गुण स्थान तक एक जीव में पाया जाता है, या उसको कह लें कि जीव के पास उस तरह के कर्म पार्टिकल रहते हैं और जब वो छूट जाते हैं तो वो 9th गुण स्थान के बियॉन्ड की अवस्था है, ऐसे मानना उसको, राइट? क्योंकि गुण स्थान ऐसा तो है नहीं कि ये तो हमारा दिया हुआ, हमारा डिस्क्रिप्शन के लिए दिया हुआ एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक व्यू पॉइंट है, राइट? तो इसलिए इसको इस तरह से समझना बहुत जरूरी है,
राइट, कि भाई जब कषाय, जब क्रोध कषाय पूरा हट जाता है, राइट, तो मोक्ष हो जाती है, ऐसा नहीं है, राइट। लेकिन जब ये वाला कर्म पार्टिकल जो क्रोध की उत्पत्ति करते हैं वो चले जाते हैं, तब जीव को बोला जाता है कि वो 9 गुण स्थान से बियॉन्ड पहुंच चुका है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जीव के साथ क्रोध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। और इस वजह से अव्यक्ति दोष कहा गया है, राइट, कि लाइक इफ वी से दैट एंगर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीव, देन आफ्टर 9th गुण स्थान वाइल विल द जीव बिकम अजीव। तो कहने का मतलब क्या, जब उसका क्रोध चला जाएगा तो वो क्या अजीव हो जाएगा? क्योंकि अजीव में भी क्रोध नहीं होता है ना, पुद्गलों में कहाँ क्रोध होता है, दे आर इनएनिमेट, दे हैव नो कॉन्शियसनेस, राइट। तो उस तरह से इसको समझाया गया। अब असंभव दोष क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक विच इज इम्पॉसिबल टू बी possessed बाय द टारगेट इज कॉल्ड असंभव दोष। कहने का मतलब एक पुद्गल में कॉन्शियसनेस का होना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल, बिकॉज उनकी डेफिनेशन ही ऐसी है। Their definition is rooted on the fact, on the premise कि don't have the consciousness। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक पुद्गल में अभी कॉन्शियस अनकॉन्शियस है और फिर कॉन्शियसनेस आ जाएगी? ऐसा नहीं होता। इसीलिए शरीर जो है ना, शरीर में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, आत्मा में होती है। क्योंकि अगर आप शरीर में कॉन्शियसनेस मान लोगे, ठीक है ना, तो वहां ये जो कॉन्सेप्ट की फैलेसी हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि अरे फिर तो ये ये पुद्गल कैसे हुआ, राइट। एंड तब तो ये अव्यक्ति दोष की बात हो गई कि पहले शरीर में कॉन्शियसनेस नहीं थी और अब नहीं है, या पहले अब है बाद में नहीं होगी, एंड सो फोर्थ, राइट। तो इसको ऐसे समझना, राइट, दिस इज टू पुट द फेथ इन द कॉन्सेप्ट कि भाई कॉन्शियसनेस तो सोल में होती है और सोल इटर्नल है। सोल सिर्फ ट्रांसमाइग्रेट करती है, it bonds, it becomes part of a skand with a particular body with a set of pudgals for a certain period of time and then moves on. And as it moves on, it takes away the consciousness with it, because consciousness is a lakshan of soul, not the body that it is bonded with, right? So that's the point being made out here, right? So some more conversation here. I would probably skip this part and let's get to this chintan item, right? Very important item for the homework, basically. So now that you have realized that Atma is different from Pudgal based upon the understanding of the first 2 stranjas of the second Dhaal, describe 5 instances where you can now change your thought process and take yourself out of मिथ्यात्व। तो आप इसको ना, जो वो 5 लक्षण से बताए गए उसके हिसाब से सोच के इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट श्रद्धा जो आपको बनानी पड़ेगी इस आंसर को करने के लिए, वो ये है कि मैं आत्मा हूं और मैं पुद्गल से डिफरेंट हूं, और यहां पुद्गल, ये शरीर भी पुद्गल है, राइट। सो मी एज एन आत्मा, राइट, if I think it that way, then how would my thinking process be changed so that I can take myself out of the mithyat? That is the chintan item. That is the item for contemplation. With that said, I know, we have went way over time, way over time. So I not have any luxury left now to cover any other topic. But I hope आपको ये concept समझ आ गए होंगे। लास्ट के कॉन्सेप्ट डेफिनेटली थोड़े गूढ़ हैं, उनको थोड़ा और टाइम लगेगा समझने के लिए, स्पेशली द डेफिनेशंस पार्ट, राइट। So let's cover it, right? As you have more doubts, if you have, please let me know and we will cover them, at the onset of the next class. Would you like to do a Kahoot now, Sneha ji, Madhvi ji and Alka ji, just as a revision to the concept that we covered? Okay, I do see 2 thumbs up, so I'll take Alka ji also as a thumbs up. Let's go with it. मैंने पिन शेयर किया है यहाँ पर, है ना?
The pin is as follows. I'll recite it. 1010767. 1010767. Now, I don't know if you are familiar with the QR code, but that will save you from typing also, by the way. If you show your camera to this QR code, it will take you directly to the app and then to the particular quiz instance. So that's another way. It's a fun way. It's the new way, basically. Okay. So far, I see Madhviji only, so I'll wait. Always the last one. No worries, no worries. Take your time. इसीलिए ना वो QR कोड को यूज, ये जो साइड में ये जो कोड है ना, इस पे अगर आप अपना आईपैड से भी हो सकता है. हाँ, आईपैड में कैमरा है तो डेफिनेटली हो सकता है. ऑल यू हैव टू डू इज, हाँ, तो उसको आप क्या कीजिए ना, स्क्रीन पे वो कैमरा, मतलब लाइक यू आर टेकिंग अ पिक्चर, तो होगा क्या कि जब आप इसको स्कैन करेंगे ना, वहां पर एक लिंक सा दिखने लग जाएगा पिक्चर पे. उसको क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द ऐप विद द राइट इंस्टेंस बेसिकली. I don't know. नहीं. मतलब आईपैड को जो स्क्रीन है ना, जिस, अच्छा आप तो ओके माय बैड, आप उसी आईपैड से ही देख रहे हैं, राइट? और यू हैव अ डिफरेंट मशीन. I can do it on the phone also, right? हाँ, वो कर लीजिए, वो बेटर रहेगा, है ना. You have the app on the phone, right? तो फोन का कैमरा show it on the QR code showing in the screen. मिलना चाहिए ऐप पहले. ये रहा. हाँ. ना. Oh, ये तो ऑलरेडी आ भी गया अपने से. Exactly, yeah. So that way it's easier. अभी तक आप दिख नहीं रहे. हाँ. So you have to, yeah. Milka ji, are you able to type? पता नहीं, आप ना स्टार्ट कर दो सच्ची, मेरे लिए मत वेट करना, बिकॉज मेरे को ये करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, पता नहीं क्यों. अच्छा. No worries. Did you get the screen to enter your name at least? मेरी ये स्क्रीन है अभी. दिख तो नहीं रही है मुझे, थोड़ा सा. नहीं, हाँ, मुझे दिख नहीं रही, सॉरी. लाइट भी तेज होगी. हाँ. साइन इन विद गूगल. Oh, you don't have to sign in per se for this, so I don't know. चलिए, anyways, let me proceed, है ना? हाँ. So let's go with the quiz now. The first question is going to come in a bit here. Okay, so first question. Which is the biggest reason behind our wandering in the world? Right? Core. Is it Naragati? Is it Devgati? Is it Mithyatva? Mithya, wrong belief, or none of the above? What is the reason for this? Okay, it is Mithyatva. Right. It's definitely not Devgati. Maybe that was a wrong fat finger press. So yes. So the right answer is Mithyatva. That is three things together. Mithya Darshan, Mithya Gyan, Mithya Charitra. Always taken together. Okay, so let's see. Keep going. Number 2. Which of the following are types of मिथ्यात्व? दो हैं, ठीक है ना? ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व. Both of the above or none of the above? It is the right answer. Oh, थर्ड. It is both of the मैं above. उंगली दिखा रही हूँ. कौन सा राइट आंसर है? I'm showing my finger. Oh. Like this.
Anyway, so I don't know. So I'm consistently seeing wrong answer आ रहे हैं. तो मैं एक चीज बता दूं, देखिए अग्रहित और ग्रहित दोनों है ना, तो that's why the right answer is both of the above, है ना? Right. It's not just one of them. Yeah. Okay, let's keep moving. So third, what is mithya darshan? Mithya darshan क्या है? Belief in opposite, the antithesis of the seven tattva, or belief in the speech of Jinendra Bhagwan, not doing darshan, and none of the above. तो इनमें से मिथ्या दर्शन क्या है? What is मिथ्या दर्शन? आप एक बार मुझे पिन फिर से बता देंगे? Looks like I can sign in. ओ यहाँ लिखा है, यहाँ पर है. ओके, आपको Okay, देखना okay. पड़ेगा, You मुझे carry नहीं. on. या सो एक्चुअली द आंसर इज रॉन्ग. सात तत्वों का विपरीत सिद्धांत ही मिथ्या दर्शन है. यही तो बात हो रही थी, राइट? क्या बात हो रही थी जब हमने इसको पढ़ा पहले छंद को? बिकॉज ये आप मतलब एंटाइथीसिस की बात हुई थी एक्चुअली दूसरे छंद को, कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन्माई विपर्ययत्व चेतन को है उपयोग रूप विनमूरत चिन्मूरत अनूप. जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, ये सच्ची श्रद्धा का फोकस होना चाहिए. लेकिन जब ये नहीं होता है वो मिथ्या दर्शन है, ऐसी बात है ना. So next one, let's keep going. Okay, number 4. How many types of tattva are there? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. कितने तत्व होते हैं? हमने पढ़े 8, 7, 5 या 9. कितने तत्व होते हैं? The right answer is 7, not 9. 7 तत्व है ना. 7 तत्व हमेशा बात करते हैं हम 7 तत्व की. जीव आदि जो 7 तत्व हैं, कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, द क्वेश्चन 5. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रहित मिथ्यात्व आर देयर? ग्रहित, एक्वायर्ड, राइट? हमने अब पढ़ा है ना. 6 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 2 हैं? क्वेश्चन है कितने तरह के ग्रहित मिथ्यात्व होते हैं? व्हाट इज द राइट आंसर? 6, 4, 5 और 2. 6, 4, 5 और 2. Oh, perfect. It is 2. Oh, sorry. The answer is 5. That is 5 है ना. मैं 2 यहां से नंबर पढ़ने लग गया. 5. 5 तरह के ग्रहित मिथ्यात्व होते हैं. और ये हमें किस स्लाइड से मिला? तो अगर आप यहां जाएंगे और लेट्स सी कहां गई वो स्लाइड. ये रहे. एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 तरह के ग्रहित मिथ्यात्व होते हैं. ठीक है, इसको पढ़ने के बाद लेट्स गो बैक टू द क्विज. Okay, next question, 6th one, I think. Yes, 6th one. What is the quality of जीव तत्व? वो उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, चैतन्य है, राइट? टोटल 5 लक्षण बताए गए हैं. उनमें से ऑब्वियसली यहां पर मतलब 3 बताए गए हैं. हिंट. तो आंसर क्या है? इज जीव तत्व उपयोगमयी? Yes, the right answer is all of the above. Right? 3 वर्ड जो बात हुई थी ना, जिन पे मैंने फोकस भी किया था, विनमूरत, चिन्मूरत और अनूप, है ना. और जब अगर हम इस स्लाइड पे जाएं तो लेट मी गो टू दैट स्लाइड वंस. स्लाइड रिलेटेड टू द सेकंड स्ट्रेंजा, ये वाली. उपयोगमयी, अमूर्त, चैतन्य और फिर अनंत गुणों का पुंज और उपमा रहित. यहाँ ये जो फर्स्ट 3 है ये आपके क्वेश्चन में थे. उपयोगमयी होना,
अमूर्तिक होना, right, which does not exist in रस, गंध एंड स्पर्श, एंड चैतन्य विद कॉन्शियसनेस. सो चैतन्य तो है, पर उसके साथ उपयोगमयी, द एबिलिटी, जानने और देखने की क्षमता है उसमें, और अमूर्तिक भी है, क्योंकि हम उसको मतलब उसका रूप, उसको क्योंकि हम सेंसरी ऑर्गन से नहीं एक्सप्रेस कर सकते. बेसिकली दैट इज व्हाट अमूर्तिक इज अबाउट, है ना. क्योंकि आप रूप देखें तो वह चक्षु आ जाता है, रस देखें तो वहां जिह्वा आ जाती है ना, गंध देखें तो वहां नोज आ जाता है, स्पर्श देखें तो वहां टच आ जाता है. तो यानी इन पंच इंद्रियों के से हम उसको को ना तो समझ सकते हैं, ना उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. दैट इज व्हाट द क्वालिटी ऑफ अमूर्तिक इज ऑल अबाउट, है ना. सो दैट इज व्हाट इट इज. नेक्स्ट वन. सो नंबर 7, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ उपयोग आर देयर, है ना. इज इट 3, 4, 2 और 7? कितने तरह का उपयोग होता है? 3, 4, 2 और 7. हिंट के लिए ये स्लाइड खोल देता हूं. ये उपयोग की बात हो रही है. तो कितनी तरह का उपयोग है? तो ये भी गलत है 2. मेरे. हाँ, कैसे 2 हुआ? 2 ही तरह के तो है ना, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग, राइट. फिर वो दर्शन उपयोग में आपकी 4 तरह के बताएं, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, वो उसका क्लासिफिकेशन. और ज्ञान उपयोग में 8 बताए है ना, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, केवल, फिर कुमति, कुश्रुत और कु अवधि, और या विभंग जिसे बोला जाता है. तो ऑल इन ऑल द आंसर इज 2, राइट. ओके, कीप मूविंग. लेट्स सी. मैं तो बेचारी. नो वरीज, नो वरीज. 3 लोग हैं, 3 लोगों में कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ. नहीं, वो काम करे थर्ड. ओके, सो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान किसके प्रकार है? अभी यहाँ क्विकली हमने वो टच कर लिया था. आर देयर टाइप्स ऑफ ज्ञान उपयोग, आर देयर टाइप्स ऑफ दर्शन उपयोग, आर देयर टाइप्स ऑफ अवधि दर्शन? सो ऑब्वियसली अवधि दर्शन तो आंसर नहीं है ना, और ना ही नन ऑफ द अबव है. सो लेट्स सी, आपको याद रहा कि क्या वो ज्ञान उपयोग के पार्ट है या दर्शन उपयोग के? परफेक्ट, इट इज एक्चुअली ज्ञान उपयोग, राइट. तो ज्ञान उपयोग में ये 8 टाइप्स आते हैं, और उन 8 टाइप्स में कुमति, कुश्रुत और कुअवधि लास्ट 3 है ना. पहले हम मति ज्ञान बोलते हैं, श्रुत ज्ञान बोलते हैं, अवधि ज्ञान बोलते हैं, मन पर्याय ज्ञान बोलते हैं, केवल ज्ञान बोलते हैं, और फिर ये 3 आते हैं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, या फिर जिसको विभंग भी बोला गया. विभंग शायद इसके बाद हो जाता है. एनीवेज, हाँ, ठीक है. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक 9th. सो नाउ वी आर 9th. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दर्शन उपयोग आर देयर? अरे ये अभी मैंने आंसर कर दिया, ये तो सही होना चाहिए सबका. कितने तरह के दर्शन उपयोग होते हैं? 4, 5, 3 या 2? दर्शन उपयोग जो पहले था, है ना. अभी हमने सब वो ज्ञान उपयोग पढ़ा, तो उसके 8 होते हैं, ये पता है. दर्शन उपयोग के कितने होते हैं? 4. राइट आंसर इज एक्चुअली 4, है ना. तो ये 4 होते हैं. अब ये 4 कौन कौन से हैं? तो अगर आप इस स्लाइड पे जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा. हियर इट इज. चक्षु, अचक्षु, अवधि एंड केवल. एंड इसको ऐसे मिलना, ये चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शन उपयोग है ना. वर्ड पूरा दर्शन उपयोग होना चाहिए, दर्शन नहीं, क्योंकि फिर वो कंफ्यूज हो जाता है ना. सो ये दर्शन उपयोग है, 4 तरह के. ओके, नेक्स्ट वन. लेट्स कीप गोइंग. नंबर 10, द लास्ट वन. व्हाट इज आश्रव? हाँ, ये मैंने कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया था. इनफ्लक्स ऑफ कर्मा टुवर्ड्स सोल, the soul itself, exit of karma from the body, or none of the above. आश्रव. अब इसकी सीक्वेंसिंग देखो, जीव, अजीव, आश्रव. परफेक्ट. द राइट आंसर इज influx of karma. You have activated your soul by reacting to the situations, and that has caused the karma particles to come towards your soul. The influx, that is what asrav is all about.
the last question. It's one of the tattva that one has to have shraddha upon. है ना? That's it. So I think we are done with the quiz. Podium finish doesn't matter because तीन लोगों में तीनों को पोजीशन तो मिलनी मेरे है. को सबसे कम है. आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला है. You are नहीं, still on the मेरा podium. फोन भी डेड हो गया तो No. बीच में छोड़ दिया मैंने. No worries, no worries. It's just, I think it's just to so that the concept sticks. That's why this aspect of Kahoot comes into the picture and it keeps it a bit entertaining. So with that said, I think we are good. We are done with this topic today. हम एक बार अब क्वेश्चंस के लिए तो हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, तो लेट्स डू दिस. हम क्विकली जावाणी के ज्ञान ते बोलते हैं साथ में एंड देन लेट्स एंड द सेशन. जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक. मन वचन काय से लेक्चर के समय मैंने आपको कोई दुख पहुंचाया हो, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ. उत्तम क्षमा मिच्छामि दुक्कड़म. क्षमा. थैंक यू एवरीवन जय फॉर ज्वाइनिंग. जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र.